In the previous video, we already created a Facebook account and Facebook page. Now in this video, we will connect that page to Facebook Business Manager and create a social media advertising campaign. सबसे पहले ब्राउजर में टाइप करें business.facebook.com। लॉगिन करें अपने फेसबुक अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ आपको पेजेस, ऐड अकाउंट, बिजनेस सेटिंग और टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। ये नॉर्मल फेसबुक से थोड़ा अलग और प्रोफेशनल वर्जन होता है। फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद मेटा बिजनेस सूट ऑटोमेटिकली बिजनेस अकाउंट क्रिएट करता है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे विजिबल होता है। इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो, सिलेक्ट दिस ऑप्शन। To create a business portfolio, enter your business portfolio name here. Add your first name, last name, and enter business email ID. Click on create. Okay, now see here, when we will click once again here, it will give us business portfolio. Refresh your page. लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है आपको पेज एंड बिजनेस एड अकाउंट ऐड करना है। सो क्लिक ऑन सेटिंग, search for account option. In account, pages and add account option is there. First we are going to add page. जो लास्ट वीडियो में पेज हमने बनाया है वो पेज हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। क्लिक ऑन ऐड। ये हमें ऑप्शन देता है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज है वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, कि अगर किसी ने आपके साथ पेज शेयर किया हुआ है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप न्यू फेसबुक पेज भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर नाउ हैव एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। योर फेसबुक पेज और URL हियर। सो दिस इज माई फेसबुक पेज जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। Next, agree the terms and condition and add page. This page added successfully. Now the next step is that we have to create an ads account. So below pages, ads account option is there. Select that option. Click on. See, option is given over here. Create a new ad account. Create an existing ad account. And here I have added already. That's why I'm not getting this option. But from here you can add account on this page. After adding, if you want to work with people, you can assign people here and you can assign roles to them also. So open your business manager account and add page and create ads account in it.